So thank you, welcome everyone to Startup Brand Pune, and we have a guest today, Karan from Pariksha. And Karan, why not we start with introduction about you? So thank you, Ayush. Hello everyone. My name is Karanvir Singh. I'm the founder of Pariksha. Pariksha is an education technology company. We are a vernacular education technology company. I'm sure you would have heard about a lot of edtech companies because India is a country which is kind of now infested with edtechs. During COVID time, we have seen a lot of edtechs coming up, right? So some estimates say that we have over 5,000 edtech companies in our country today. But the good ones, probably you will count them on your fingertips, maybe 10 or 20 of them. And I think Pariksha is among one of those, primarily because our focus is very, very different. Our focus is very, very niche, and probably we're a little late to start. So, the other creamy layer was already taken. And since we have some close connect, emotional connect with Bharat, so we thought let's look at building a tech company which is focusing on the Bharat market. So Bharat is in Satara, Sangli, Kolhapur, Jaisalmer, Suratgarh, Kasargoda, not Delhi, Bombay, Bangalore. Delhi, Bombay, Bangalore is India, right? And there are a lot of places to serve Delhi, Bombay, Bangalore. Yeah. And I strongly believe that the true need of edtech is not in India. You don't need an edtech in Pune because they're good teachers. I'm talking about K-12, test prep. I'm not talking about upskilling, especially the tech part. But if you look at Pune, Delhi, Bombay, Bangalore, you've got good schools, good teachers, good infrastructure, right? Even private tutors. So a student has a lot of avenues to go and learn from. But the moment you talk about somebody who's living in Kasargoda, in the name of the school, you've got just 2 rooms. And in the name of the teacher, एक बंदा आता है 2 घंटे चाय पीता है अपनी हाजिरी लगाता है चले जाता है, right? So huge disparity between the rural education ecosystem and the urban education ecosystem. So we thought, let's focus on this market. This is a very, very tough market, though. The moment you talk about Bharat, you are talking about multiple languages, right? In Maharashtra, it has to be in Marathi. In Tamil Nadu, it has to be in Tamil. In West Bengal, it has to be in Bengali. And second is we are in a tested domain, so the syllabus for each exam in these states is very, very different. Maharashtra Police Constable exam syllabus is very, very different than Maharashtra Talati exam. And Maharashtra teacher exam would be very, very different from Maharashtra Revenue Services exam, right? So very, very different syllabus. And then you add the complexity of this exam being vernacular in nature. I'm a soldier's son, so I had the privilege of living all across our country. Every 2 years, 3 years, my father used to get posted to a new station. So I'm very fortunate that from Pathankot at the top to Sikandrabad at the bottom, I've seen most of the good places. But most of the places were not as fancy, as good as Delhi, Bombay, Bangalore. Right? These are small towns and cities, Suratgarh, Jaisalmer, smaller ones. Primarily a cantonment and small markets. Purane Zamane type ke school type. So I had the fortune of studying in smaller cities also, and then I came to Pune for my higher studies. I did my law from Symbiosis Law School and then did MBA from SIB again in Pune. Fell in love with this beautiful city. It is very warm, very vibrant, very young, and I decided to make Pune my new home. This idea was born out of our own personal experience. We all, I'm sure everybody in this room, we have prepared for multiple exams, right? And you would agree with me that preparing for exam is a very lonely and a very boring process. At the start, you're very, very excited. You'll go and you'll buy all the books, all the study material, and you make the timetable, and for 2-3 days you follow it. फिर वो धीरे 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 इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है. इट इज एग्जैक्टली लाइक गोइंग टू अ जिम. बंदा सोचता है कि आज ही 6 पैक बना के निकलूंगा बस में, ठीक है. तो 2-3 दिन आप जोश में जाते हो, उसके बाद आपकी मेंबरशिप बेचारी धूल खा रही होती है. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. सो वी थॉट हाउ कैन वी मेक टेस्ट प्रेप more engaging, more rewarding, and outcome based. Otherwise, it's very, very lonely. So that's when we thought that let's introduce this gamification in the entire test prep, so that students are more engaged, because we are living in the age of gamification, right? We thought, how can we personalize it, because not every student is same, right? Everybody in this class, in this in this office, we all have our different learning experiences. We all come from different environments, so our knowledge of observing capacity would be very, very different. So we thought, how can we give a very personalized experience to students, because education per se has not changed in last 400-500 years.
इनफैक्ट सिंस द टाइम इट स्टार्टेड, वो एक गुरुकुल वाली जो परंपरा थी कि एक गुरु पढ़ा रहे हैं और बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो आज भी चलती आ रही है. इट इज जस्ट दैट वी हैव एडेड layers of fancy technology, multimedia, animations, graphics, but essentially education today is delivered in the same manner. एक पढ़ा रहा है, बाकी सब ले रहे हैं. कुछ लोगों का समझ में आ रहा है, कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा है, कुछ लोग बोर हो रहे हैं, right? So we thought let's try to deliver a very personal experience, gamified experience. So that was the entire idea behind Pariksha. I'm very fortunate. I have great co-founders. Two of my co-founders are from IIT Kanpur, and two of us are from Symbiosis. So very good team in the sense that we have technology, sales, marketing, fundraising. All of these skills are very, very essential when you are building a company. If everybody is from technology, Right. nothing will happen. And if everybody is from sales, marketing, nothing will happen. Who's going to do the product, right? So you need to have a very complementary skill set, a team which is very cohesive and which is purpose driven. So I was very fortunate that I could find such co-founders. But my journey has been very, very different, ma'am, and it has been influenced by a chartered accountant, in fact. So everybody in my family is in the armed forces, everybody. And when I told my father that I want to do something else, he was kind enough to allow me to pursue my dream. But he said, what will you do? I said, I'll prepare for civil services. The reason was that I wanted to stay back in Pune. That was the reason. Civil services was not the idea. Idea was something else. Okay. So फिर मैंने बोला यार बोल दिया अपने फादर को कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, फौज नहीं, तो what should I do now? So I started looking for books to prepare for civil services, and unfortunately at that time I could not find good books here in Pune. So I had to request a friend of mine to buy books from Nice Redact. This is an area in Delhi where you get all the competitive exam books. So I thought if I'm facing this problem, sure other guys who are not from Delhi would also face this problem, right? So how can we solve this? So that was the entire idea. So I'm an accidental entrepreneur. Nobody in my family has ever done any business. In fact, when I told my father that अब मैं सिविल सर्विसेज ना करके एक entrepreneur बनना चाहता हूँ, he said यार हमारा तो डीमैट अकाउंट भी नहीं है. So I'm a Rajput and then a soldier son. तो हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो पुलिस ज्वाइन करो या फौज ज्वाइन करो, उसके अलावा कुछ नहीं होता. तो he said यार बिजनेस तो बनियों का काम है, people who understand business, हमको तो कुछ भी नहीं आता. But again he said, okay, you want to do it. And I remember मैंने सोचा एक वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ, तो मेरा लैपटॉप खराब हो गया. सो मैं एक स्टोर में गया जो कि लैपटॉप रिपेयर करते थे. फॉर्चुनेटली द ओनर ऑफ दैट स्टोर वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, तो उनके अभी शायद फ्री टाइम था. ही सेड व्हाट डू यू डू? आई सेड आई एम एन एंटरप्रेन्योर. सो ही सेड ओके यू आर एन एंटरप्रेन्योर. आई सेड यस. सो ही सेड व्हाट डू यू डू? सो आई सेड आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन एजुकेशन बिकॉज़ एट दैट टाइम एडटेक वाज नॉट अ वर्ड. So he said, okay, from where did you get this money? I said, I've taken it from friends and family. तो बुआ से लिया, चाचा से लिया, मामा से लिया, नानी से लिया, सबसे लिया, सबके बोले किसी को बताना पड़ता, राइट? तो आपने वो एक कोट देखी होगी, there was this very iconic movie called बंटी और बबली, right? So there was this dialogue, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, right? तो ऐसे करके सबसे मांगा पैसा, and everybody was kind कि चलो बच्चा कुछ कर रहा है तो दे देते हैं. So I was sitting with him and he said, from where did you get money? So I said, I raised it from friends and family, and that was my first business lesson. He said, whenever you are trying to build a business, तुम अपना चूल्हा जला के रोटियां नहीं सेकते हो. You have to raise capital from outside. How do you do it? Why will anybody give you money, right? So he said, no, you should go and meet angels and VCs. Angels or VCs क्या होता है? So I was that naive at that time when I started. He said, I have a friend of mine who lives in Bombay. He's again a chartered accountant, but he's an angel investor and he's very close to the angel investor community. So you go and meet him. बोला ठीक है. तो सबसे पहले मैंने जो चीज की वो आके देखा कि एंजल इन्वेस्टर्स होते क्या हैं गूगल पे. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई लर्न कि व्हाट एंजल इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट. Another very interesting thing that I wish to share with you again on the naive part, because today the ecosystem has become very, very conducive for entrepreneurs. But when I started, they were not as much a support system as we see today. मैंने किसी दोस्त से बोला कि यार मुझे एक वेबसाइट बनानी है. तो उसने बोला हाँ यार मेरी नेटवर्क में एक बंदा है, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मिल लो उससे जाके. So उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया. मैं उस बंदे से मिलने के लिए गया. साकार नगर करके एक जगह है, वहाँ पे उसका ऑफिस था. तो उसने बोला तुम क्या करना चाहते हो? मैं बोला मैं ऐसे एक टेस्ट प्रेप के ऊपर एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ. एंड ही सेड, उसने मेरी सारी बातें सुनी एंड ही सेड कौन सी लैंग्वेज बनाना चाहता हूँ? कौन सी लैंग्वेज बनाना चाहता हूँ? बिकॉज़ आई वाज लॉ स्टूडेंट एंड देन मैं बोला लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होनी चाहिए. तो बंदा समझ गया कि इस बंदे को कुछ नहीं आता. तो ऐसा नहीं, हम आस्किंग उस टाइम पे होती थी जावा,
PHP, ASP, not even ASP, .NEट वाला भी नहीं था. So मैंने बोला उसने मुझे लैंग्वेज के नाम बताए. इसे ये तो मैंने सुनी नहीं है, मुझे तो वेबसाइट इंग्लिश में चाहिए. तो उसने ठीक है इंग्लिश में बताया, कोई दिक्कत नहीं. Then the second googly that he threw at me was कौन सा डेटाबेस चाहिए. So मैं डेटाबेस से मुझे लगा जिसने स्टोर कर सके, वो हार्ड डिस्क, फूड डिस्क, वो सब चीजें बनाए यार. डेटाबेस मैसिव होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर. So he said आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा Oracle का डेटाबेस ले लो आप. सोचिए Oracle का डेटाबेस for somebody who just trying to do something, make a website. So that was how I learned, burned my fingers, learned the hard way. Unfortunately, couldn't get support from my family and friends also because किसी ने धंधा किया ही नहीं था. तो क्या तो जमींदार थे या फिर वो फौजी थे, दोनों को कुछ बिजनेस वगैरह का तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं. But then I started meeting, met that angel investor. He told me a couple of things and then started reaching out. So at that time I was so naive that I used to write to any and everybody. तो कहीं मुझे किसी नोकिया के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का मिल गया और उसमें कहीं तो उसने लिखा था नोकिया फंड. तो मुझे लगा फंड तो मतलब इन्वेस्ट करता है, ठीक है. तो आई इवन रोट टू मुकेश अंबानी एट दैट टाइम. कहीं से भी ईमेल वगैरह निकाल लेता था, मैं यूज्ड टू राइट टू देम. सो दिस नोकिया गाय वाज वेरी काइंड, ठीक है. पता नहीं उसको शायद अच्छा लगा वो पढ़ के कुछ जो मेल से लिखा था. He forwarded to a VC fund called BRV, Blue Run Ventures, which is a US Palo Alto based venture capital fund, and probably these Nokia guys were LP in that fund. And then I got a call from US. कौन मजाक कर रहा है, US मैंने किसी को लिखा ही नहीं, भेजा ही नहीं. तो उनका रात को कॉल लेट नाइट आया. They said, we have received your presentation, we want to talk. लेकिन I haven't shared this with you. तुम्हें बताया somebody else has shared. So that was my learning, that was my experience. From there to today, I think come a long way in the sense that learned a lot. I don't know how much we have, what kind of value you have created, but as far as learning is concerned, it has been like immense. Now, पहले मुझे लगता था यार presentation बना ली, Excel sheet बना लिया, projections वगैरह है उसके अंदर. So I should go to VCs and angels and raise capital. They should give me. I'm a smart guy. That's what I used to think. But when you meet VCs, मेरे जैसे smart guys 100 मिलते हैं रोज, right, and angels. So I used to wonder why are they not investing, because I met a lot of VCs at that time and saw and faced a lot of rejections at that time. I used to wonder why are they not investing? Can't they see that passion in me? What more do they need? मैं बोलता था मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा. आजकल के जो बंदे बोलते हैं सारा कि सर मैं बस पैसा लगा दो, मैं नेक्स्ट यूनिकॉर्न बना लूंगा. That's how, and I'm sure that's how almost like all of us who do not have any formal understanding of business or who do not come from business background they start. But then over a period of time I realized that raising capital is half science and half maths, and if you could do it right, your chances of raising capital is very, very high. I'm not saying that it is very certain, but it is very, very high. My learning and my experience is that whenever you are doing any business, you have to have 5 essential things. If you have them, I'm talking from the idea perspective. क्योंकि सबसे पहले प्यार हमें होता है आइडिया से कि मेरा आइडिया तो दुनिया का बेस्ट आइडिया, राइट, ये तो यूनिकॉर्न है ही है. But how do you evaluate an idea? Essentially, all of us, we all entrepreneurs are trying to solve a problem. Now, how do we see business in that problem is something that I want to talk about. So there are 5 things that whenever we look at any idea. First is your idea should have some kind of novelty. कुछ तो उसमें नयापन होना चाहिए. अगर वो आइडिया नया नहीं है, you want to be another copycat. These VCs and angels are very, very smart. They do investment for living, so they are aware कि market में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. So if there is no novelty, people will not invest in that. Second is idea बहुत novel है, but is it viable? चांद पे घर बनाना चाहता हूँ. It's a very beautiful novel idea, but is it viable? Can it be done? Can you make money out of that? The second most important thing was the viability of the idea. Third was, idea is novel, idea is viable. The third most important thing is your idea scalable? Because VCs will not invest in a company which is not looking at least $1 billion market size. अगर $1 billion से कम है तो फिर आप कोई और मेथड ले लो, VC नहीं डालेगा पैसा. So your idea has to have scalability.
Next important thing is defendability of the idea. Can you create some kind of barriers that will defend your idea? If your idea can be easily copied, तो फिर उसे पता है कि यार कोई भी ज़्यादा पैसे raise करके लेके आएगा, and we have seen that happening in the market, right? A larger guy with a lot of money came and he wiped out the first mover, in fact. So there has to be a defendability built into an idea. It can be team, it can be technology, it can be patents, you know. And the last thing is your idea, it needs to show that in the long term it can make money for investors, which is profitability. So these are the 5 things that are very essential. So whenever we are evaluating any idea, if you could just focus some time on this and take feedback of not just ours, because हम तो bias ही होंगे अपने idea को लेकर, right? और माँ के सारे बच्चे सबसे सुंदर, सबसे अच्छे मेरे बच्चे, वैसे ही क्योंकि आइडिया आपसे आ रहा है तो सब बोलते हैं ये तो बेस्ट है. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम 10-15 और लोगों से डिफरेंट लोगों से सलाह लें कि यार कैसा लग रहा है. बट इफ यू असेस एनी आइडिया ऑन दीज 5 पॉइंट्स, नोवेलिटी, viability, scalability, defendability, and profitability, your chances of at least proving that idea is good, वो तो हो जाएगा. But more than idea, it is important that we have to have a very right team. Right? Ayush here has built a great team. So I think there can be no replacement for a great team. VCs and angels might invest in a second grade idea, provided it is led by an alpha team. But if you have a alpha idea, but the team is, let's say, Bravo, they will not invest. Because essentially ideas, they don't move on their own. Ideas, they need people like you and me, you know, to take them to their destination. So we are drivers essentially, right? But if you allow me, I would also like to start here. पैसा raise करना क्यों? Because सबसे ज़्यादा इज्जत आप किसी की होती है तो उन्होंने entrepreneurs की होती है, उन्होंने पैसा raise ही नहीं किया. Because जब आप एंजल या VC को चेस करने लगोगे, you will realize that a lot of your time, which should have gone into building business, is going chasing these investors. Okay, so some great entrepreneurs who have not raised capital but have built great companies. श्रीधर वेंगू, Zoho. आज जो दुनिया का कौन सा ऐसा VC फंड होगा जो उसमें पैसा नहीं लगाना चाहता होगा? इन बंदा बोलता है नहीं चाहिए, वो भी एक स्वैग है, नहीं चाहिए, ठीक है, जीरो था, do not raise capital, profitable company. These two guys are running a profitable company, immense respect. Probably VCs will chase these guys, you don't have to chase them. So there are very early in my life, I met one of the VC and he said there are 3 ways of infusing capital in the company. The first is what these guys are doing, wherein your revenues are financing your company. That's the best thing. You're your own boss. You're not diluted your equity. और कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि जैसे आप फंडिंग रेज कर लेते हो ना तो आपके ऊपर 1000 किलो का वजन आ जाता है. वो जो जी फोर्स आपने अभी मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी ना, तो वो जो 10.1 वाला जी फोर्स होता है ना, वो एकदम से आ जाता है जब फंडिंग आप रेज कर लेते हो. उससे पहले तो अपनी कंपनी है. So the best way is when we could make our customers pay for the services or products that we are selling, which is revenue-based financing, which these guys are doing. Second method is we can go and raise some money from banks or other financial institutions, but they would require some kind of mortgage or some kind of assurance, जो कि entrepreneur के पास नहीं होती. मतलब मैंने ऐसे में entrepreneur देखे नहीं कि गाड़ी में तो देखे क्या, खुद भी वैसे ही रहा हूँ कि गाड़ी में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं होता था कि यार एक VC से मिलने जा रहा है और पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है, एंड देन यू आर वरीड कि अगर जिस होटल ने बुलाया उसने पे करने के लिए बोल दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी. एंड जनरली एक एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा लार्ज हार्टेड होता है, बोलता है सर लेट मी पे, ठीक है, एंड ही इज होपिंग कि अगला बंदा बोल देगा नहीं डोंट वरी इट्स टेकन केयर, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट. सो लोन या मॉर्गेज करके कुछ पैसा उठाना, इट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट. Not everybody has got assets. And third way is when we raise funds from these angels or VCs. But angels and VCs will not invest in you on day one. They would want to see that can you convince your friends and family to put in money in your business. क्या आपकी स्किन है कि नहीं है, या किसी और का जो चूल्हे वाली बात मैंने की, किसी और के चूल्हे अपनी रोटियां सेक रहे हो उसके ऊपर. So पहले तो you have to convince your friends and family. If you are able to do that, at least एक तो
वैलिडेशन मिल गया आपको कि somebody is buying this idea, चाहे वो प्यार में ही ले रहे हो कि मेरा बेटा है चलो डाल देता हूँ, but at least you are able to convince somebody. So these are the three ways of raising capital, wherein either you use your revenues to fund your growth, second is you do some kind of debt funding, and third is when you do your equity investment where you raise capital from VCs. I think I've shared 5 things, 5 essential ideas. Now let's talk about so this you can more or less, you can quantify these 5 points. कि on a scale of 1 to 10 मेरा कितना आइडिया, ask people कि तुम्हें कितना नोबल लग रहा है यार, कितना नयापन है इसके अंदर, कितनी डिफेंडेबिलिटी लग रही है. डिफेंडेबिलिटी के भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, उनको अगर हम पढ़ लें थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि क्या पैटेंट है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है हमारी जिनको लेके हम जा सकते हैं. So I think there's a lot of information available in the market. If we just put our brain, if we put some time there, we'll be able to figure out. So we can, आप एक स्कोर कार्ड बना सकते हो एटलीस्ट अपने आइडिया का, और दूसरी तरफ अपनी टीम का बना सकते हो. तो जब सारी चीजें हो जाती तब is the time when you should first raise from your friends and family, not from VCs, where you find very few investors who would be willing to invest on day one. मतलब ऐसा भी हुआ है जिन्होंने नैपकिन के ऊपर भी लिख के दे दिया है, वो भी कहानियां हैं, वो लेजेंड्स हैं, बट वो एक्सेप्शंस हैं, वो आउटलायर्स हैं, and we do not make a business on exceptions, right? So it is important कि पहले एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लें. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, इनफैक्ट पढ़ने के बाद भी नहीं समझते, जो कि मैं भी नहीं समझा, मैं भी बहुत लेट समझा. तो सब लोग कहते हैं कि सर ये $1 बिलियन मार्केट है, इस $1 बिलियन का 0.01% भी लिया तो $10 मिलियन का तो रेवेन्यू हो ही जाएगा, राइट? बट VCs डोंट लुक एट, VCs और एंजल्स, सीजन्ड एंजल्स, नया कोई एंजल आया तो बात और है, उसको तो इनफैक्ट वो एक्साइटमेंट होता है कि यार पहला चेक कहाँ काटूं, किसमें डालूं. जब 2-3 कट जाते हैं ना उसके बाद फिर वो बहुत हाथ जल चुके होते हैं, उसके बाद वो बहुत धीमे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब तक सीख गया होता है. ठीक है. So VCs when they look at market, they look at it from a very different viewpoint. So they look at this TAM, SAM, so on. I'm sure everybody in this room would be aware. So we are all aware, but to do that actual match to figure out that real market is very difficult, because there some kind of art to understand your customer also comes into the factor. वरना सब लोग क्या होते हैं, सर 500 मिलियन मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स हैं, ये मेरा मार्केट हो गया. तो उसमें से कौन से हैं जिनके पास में स्मार्टफोन है, कौन से हैं जो उस डेटा प्लान को अफोर्ड कर सकते हैं, कौन से हैं रूरल, कौन से हैं अर्बन, वो कस्टमर पर्सोना बनाना बहुत जरूरी. सो इफ यू डू दिस देन यू विल कम टू नो कि यार मेरा मार्केट जो मैंने सोचा था $1 बिलियन उतना है नहीं. So if you do this early, you will not get disappointed, because VC will eventually do it. All the VCs will do it without any exception. So it is good कि हम वो खुद ही एक conservative number लेके जाएं और उसे convince कर सकें. Another very important thing that we have to keep in mind is that not every VC would know everything. जैसे अगर मैं edtech की बात करूं and especially vernacular tech की बात करूं, I think I would know more than most of the VCs. बिकॉज VCs का वो साइड हसल इन द सेंस वो मेरी जैसी 10 कंपनियों को देख रहे हैं. सो वो जो 24 घंटे में से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं, मेरे 24 के 24 घंटे ही जाते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड अबाउट दोस लेजेंडरी स्टोरीज कि ट्विटर में बोला कि कोई पैसा नहीं डालेगा. दिस ट्विटर गाइस दे वेंट टू ऑल दीस VCs, राइट? एंड एवरीबॉडी सेड यार इतने कैरेक्टर में तुम कहानी बनाना चाहते हो. उस टाइम पे जमाना था ब्लॉग्स का, वर्डप्रेस, ब्लॉगस्पॉट, राइट? लंबा लिखो कुछ, तुम ये 3-4 लाइन में क्या बता रहे हो. बट द एंटरप्रेन्योर्स दे न्यू कि धीरे जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है ना, अटेंशन स्पैन सबका बहुत कम होने वाला है. सो कम लिखा ज्यादा, जैसे फौजी चिट्ठियों में लिख के आता था लास्ट में, कम लिखा ज्यादा समझना, राइट? सो वैसे ही आपको कम में ज्यादा कहानी बतानी. एंड उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं था, और आज भी some time back there was this VC fund which said no to Twitter and they wanted to invest, and I think they did invest also. So you have to be very confident about your market, but not emotionally confident, rationally confident. So there's difference. नहीं सर मेरा आइडिया सबसे अच्छा है और आप सुनने को तैयार नहीं हो किसी की. दूसरा होता है लॉजिक और रैशनैलिटी बेस की मैंने ग्राउंड वर्क किया है, ठीक है? 50 आदमियों से मैं आपकी बातचीत करा सकता हूँ, इतने शहरों में मैं गया हूँ. तो वो चीजें ऐड करती हैं. जैसे when we started परीक्षा,
And when we looked at this market, सबसे पहला सवाल था कि why is it that Byju's, Unacademy, Vedantus of the world, they are not looking at it? Are we making some fundamental mistake here? Okay, because markets can't remain virgin. Okay, it is nature's law. They can't. Somebody will come and conquer that. तो हमें लगा यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि we are the first mover in this segment. They can't be that lucky. Right? And it is good to assume that you are not that lucky. Otherwise, you are living in your illusory world. So हमने बोला यार थोड़ा सा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, and then we realized there were like multiple companies that had come to serve this market before us. Multiple companies and some very big companies, but all of them failed. All of them failed without any exception. And they failed because they failed to understand the unique characteristics of Bharat market. Unique characteristics and unique challenges. Sangli is very, very different from Bombay. If you are trying to impose business, Bombay का business model on Sangli, it will not work. It is just like मैं न्यूयॉर्क से कुछ उठा के लेके आऊँ और यहाँ पुणे में चेक किसी को, it will not work, right? So you have to understand your market very, very closely. So what we did was here, let's travel. So between, for founders, we traveled to almost 90 small towns and cities just to understand Bharat a little better. And we realized that Bharat is a very, very aspirational market. हम एक जगह में गए आयुष, उस जगह का नाम था झाबुआ. झाबुआ is a tribal district in Madhya Pradesh. It's not even rural. It is the last level of classification. Tribal district. We received an invitation from there. My co-founder said that we have to go there. I said, you are talking about going to a tribal district. वहाँ पे लोग भाले वाले लेके खड़े होंगे, पकड़ लेंगे अपने को वहाँ पे. We said, let's go there just to understand that market. We went there, and to our surprise, this is 2018. To our surprise, 2018, people had smartphone in a tribal district. People were using Jio, BSNL, 399 rupees में वो 1.5 GB का डेटा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में. वहाँ पे हमें कोई ओयो नहीं मिला कि हम कहीं रुक जाए वहाँ पे रात को, बट इंटरनेट मिला. एंड वहाँ पे हमें लोग मिले जो शाहिद कपूर की तरह दिखते थे, ग्रीन कलर के बाल किए हुए, टॉन जीन्स, मतलब जो शायद आप और मैं ना करें उतनी फैशन वहाँ पे थी. एंड देन वी रियलाइज दैट भारत मार्केट इज वेरी, वेरी एस्पिरेशनल. दे आर प्रॉब्ली मोर एस्पिरेशनल देन यू एंड मी, but they do not have a lot of avenues to show their aspiration, because most of the Indian companies, most of the multinational companies, they are focusing on the top 10% market in India, right? भारत का जो कस्टमर है ना, उसके वॉलेट शेयर और माइंड शेयर पे किसी को, सबको लगता है कि परचेसिंग पावर बहुत ही कम होगा, तो क्यों फोकस करें? कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत ही कम होगी, क्यों फोकस करें? Acquiring this customer is going to be extremely, extremely difficult. What most of them failed to understand was that it is right, acquiring this customer is difficult. But once you have acquired this customer, it is comparatively much cheaper to serve him and to retain him. Because Bharat का जो एक customer होगा ना, it is going to give you more, मतलब they are more loyal than the urban customers. We urban customers are very, fickle minded. ये ऐप इंस्टॉल किया, हटा दिया, दूसरा ले लिया, इसको हटा दिया. वहां पे अगर किसी ने कुछ कर लिया तो दे विल मेक यूज ऑफ दैट फॉर सम टाइम. एंड सेकंड इज, यहाँ पे दिल्ली में, बैंगलोर में बहुत कंपटीशन है और ऑप्शंस बहुत है ना, वहां पे ऑप्शंस कम है, तो जो मिल गया अच्छा यार हम यूज है. आई रिमेंबर आई वाज विद अ जेंटलमैन आयुष, एंड ही इज नाउ सम बिग शॉट इन कोटक महिंद्रा बैंक, बट ही स्टार्टेड स्मॉल. वो एक गांव से आता था, तो बोलते देखो मेरे बच्चे जाते हैं स्टारबक्स में और वहां पे जाके 300 रुपए का कैपेचिनो लेते हैं और मुझे चाय अच्छी लगती है 10 रुपए वाली. ठीक है, क्योंकि चाय तो 10 रुपए वाली है, वो 300 रुपए वाला तो पीयर प्रेशर है. यू वांट टू लुक सेक्सी, यू वांट टू लुक ऑल ऑफ दैट. इसे मैं ये अभी अपनी जो कमीज है सिलवाता हूँ और पहनता हूँ. मेरे बच्चे लेके आते हैं ज़ारा और ये सारी चीजें, 3,500 से कम की कोई शर्ट नहीं होती उनकी. अब बोलते एक बार मैं गाँव चला गया उनको लेके कि चलो दिखाता तो हूँ तुम्हें. अब गांव में शोबाजी करने के लिए सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े लेके गए, जूते, वो आजकल के तो जूते ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आ रहे हैं, राइट? यू हैव येलो शूज, यू हैव रेड शूज, ब्राउन, ग्रीन, मतलब जैसे पहले लड़कियों के पास लिपस्टिक के शेड्स होते थे वैसे आजकल दोनों के पास शूज होते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. आप वो सोच रहे थे कि प्रॉब्ली विल गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स देयर, पीपल विल से वाओ दिस इज नाइस, एंड नोबडी वाज एक्नॉलेजिंग हियर इज ज़ारा, बिकॉज़ लोगों को पता ही नहीं था ज़ारा क्या है, राइट? उनको ये था 150 रुपए में शर्ट सिलता है हमारा टेलर, वो अच्छा काम करती है, 1.5-2 साल निकाल देती है विदाउट एनी इशू. सो
Bharat market is very, very aspirational if you understand. So we realize that there are 5 things about Bharat market which if you understand, you will not fail. Okay. First is Bharat market has a very low trust on anything online. वो आज भी टच एंड फील वाले हैं कि मान लिया तो गर्दन पकड़ने के लिए कोई होना चाहिए कि पैसा रखा है कुछ गड़बड़ होगी तो किसी गर्दन पकड़े, राइट? So you have to have high trust built into your offering if you want to serve the Bharat market, and this is relevant if you're targeting any new online customers. Trust होना चाहिए, right? Second is credibility. कोई तो बोलना चाहिए मैंने यूज किया था अच्छा था ये, वो नहीं होगा. आपने देखा होगा गांव में छोटे शहरों में आप जाएं तो आज भी लोग कपड़ा छू के लेते हैं और उसको ऐसे रगड़ के भी देखते हैं, राइट? वहां जहां पे लिखा भी होगा कि प्लीज ऐसा मत करो, डू नॉट टच, फिर भी पीपल विल डू इट बिकॉज़ दे वांट टू फील इट. और गांव में आगे होता है कि आपकी ना एक वो लेगेसी वाली शॉप ही होती है कि अच्छा कमीज खरीदनी है, जैसे मैं राजस्थान से आता हूं वहां पे साफे वाफे बांधते हैं हमारे, तो पता है कि यार साफे के लिए उसी दुकान पे जाना है क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनी हुई इस बंदे की कि ईयर आफ्टर ईयर वी हैव सर्व्ड देम. सो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी. थर्ड इज दो डिजिटल पेमेंट adoption is growing at a very rapid pace in Bharat, but still people are more comfortable doing cash transactions, especially the older generation. Younger generation तो it's a WhatsApp, Paytm, Google Pay, but those are not decision makers there. Decision maker हमेशा पिताजी होंगे, राइट? और पिताजी हैं ट्रेडिशनल माइंडेड, पैसा हाथ में दूंगा माल हाथ में दूंगा, राइट? सो यू हैव टू इनेबल कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन इफ यू वांट टू सर्व इन भारत. सो फर्स्ट वाज ट्रस्ट, सेकंड क्रेडिबिलिटी, थर्ड इज यू हैव टू हैव cash based transaction in the Bharat market, offline transaction if I could say that. Fourth thing is that though internet penetration is growing at a very rapid pace, but Bharat market में अभी भी challenge है जहाँ पे you might not get a very seamless or a very high speed internet connection all the time. So in your business model you have to have a solution for this. कि यार वो बंदे की वीडियो चलते रहते कहीं बंद ना हो जाए, राइट? या उसका कनेक्शन लो नेटवर्क में हो, स्पीड कम आए तो कहीं उसको अच्छा वो ना मिले. सो यू हैव टू, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी से. एंड आई थिंक द लास्ट थिंग इज forgetting one was trust, credibility, offline transactions. So I'm sorry, my memory is not serving you well, but as soon as I recollect, I'll share that with you. So you have to have all these things built into our Maybe reference from each other? Yeah. From each other? Does that work? Not so वो trust में आ गया, credibility में आ गया, किसी ने use किया है, but I don't know. I sometimes surprise myself. Forgive me for that. But so what I'm trying to tell you is that वो जो 10 slide है ना, उस 10 slide में you have to show a lot of meat there. That इस बंदे ने अपनी research की है, okay? और उस research को ये validate कर सकता है. He is not talking in thin air. Thin air में बात करने वाले बहुत सारे entrepreneurs आते हैं उनके पास में. And VC का या angel investor का attention span is 15 से 30 सेकंड. 15 से 30 सेकंड में अगर आपने उसको impress कर दिया, वो ध्यान देगा. अदरवाइज वो अपने फोन पे लग जाएगा, कुछ करता रहेगा, अपनी स्टोरी देते रहो, nothing will happen. I'm sure some of you who presented to VCs, you would have seen that he's not going to make an eye contact with you like this. They rarely do it, and he's never going to say that hey, your idea is not good. But politely, yeah, come back again. You want to see more traction. We'd be more happy if you could convince somebody else also. We'd be happy to co-invest, right? Because VCs को भी नहीं पता है कि ये वाला आइडिया अच्छा है या बुरा है, राइट? वो पावर लॉ होता है वीसी के अंदर, राइट? कि 10 में से 2 या 3 ही है जो कि उनको मल्टी बैगर देंगे. सो इवन दे डोंट नो इट. सो दे डोंट वांट टू destroy their chances of investing in this company once it becomes or once it shows some kind of scale, traction, viability वगैरह. So very politely they say, we want to see more traction, or please come back to us when if you could convince someone else also, some other, you'd like to co-invest. But if you have such strong, research, data points where you are able to justify and convince, because numbers बहुत ही अच्छे तरीके से convince करते हैं लोगों को कि देखिए ये number है, numbers they don't lie, right?
But there's a very interesting thing. Sometime back, there was this Sequoia guys, and there was another gentleman who was sitting, and somebody in the audience, they asked them that what is more important, story or numbers, data. So we human beings, we look at numbers later, story first, right? Movie देखने जाते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, right? So first you have to strike anybody here. यहाँ पे कर दो तो उसके बाद में then you justify it with numbers. So first you have to give them a very compelling story, and then you justify that story or back that story with data or numbers. That's how it is supposed to be. One mistake that most of us, and even I have made, is that we do not go and give a story to a VC. हम क्या करते हैं, ये स्लाइड 1 जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है स्लाइड 2 से, ठीक है, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है स्लाइड नंबर 3 से. इट हैज टू बी अ स्टोरी. मैं जब प्रेजेंटेशन देता था, मेरी एक फर्स्ट स्लाइड खुल जाती थी, उसके बाद मैं स्लाइड भूल जाता था कि मेरे को स्लाइड भी चलानी है, और मेरे पास एक बहुत खूबसूरत कहानी होती थी और मैं उसको बताता था. वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी लव स्टोरीज, राइट? आई कुड, मतलब आयुष वैसे ही सब लोग जानते, बट I could remember him more because two interesting things he said, and they will last with me forever. And as long as they last, you know, he's there. He's part of my memory, right? एक थी वो बंदरों वाली कहानी जो, you know, I'll request him to share with all of us again. And another was that, you know, concentration and versus collaboration. Great thing. So everybody loves a great story. And one thing about the other interesting thing about story is that you need to have a great narrator also to narrate that story. राइट? वो फरहान अख्तर के फादर साहब का नाम क्या है? जावेद. इज अ ग्रेट स्टोरी राइटर, बट शायद नरेशन में अमिताभ बच्चन की जो वॉइस है, जो टोन है, वो अलग ही मैजिक डाल देती है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक ग्रेट स्टोरी हो, और छोटी स्टोरी हो, कंप्लीट स्टोरी हो, एंड साथ में ग्रेट एक नरेटर भी हो स्टोरी को सुनाने वाला. बहुत बार ऐसा होता है कि टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से किसी की फैंसी डिग्री होगी, किसी के पास में फैंसी एक्सपीरियंस होगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से जॉब के लिए कौन सा बंदा सही है. इट इज जस्ट लाइक स्पेशल फोर्सेस, राइट? एवरीबडी कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट देन देयर आर स्पेशलिस्ट. देयर आर स्पेशल फोर्सेस में somebody would be like explosive expert, somebody would be a sniper. It's not that other person cannot pick up that sniper rifle and shoot. They can, but they can't do it as good as this guy can do, because this is his core competency, core skill. He's been trained on all the other skills, but this is specialty. Some would be a medic, right? वो गोली लगी तो वहीं पे आपको फिक्स कर देगा to fight. So it is very important कि टीम में figure out करें. And generally it happens that somebody who is narrating a good story, who's facing investors, who's facing the market, will become the face of the company. It happens, you know, whether you like it, you don't like it, it happens. So होता है कि किसी ने और ने शुरू की, किसी और का आइडिया होगा, बट कोई और फिर फेस बन गया. इट हैपेंस ऑल द टाइम. सो माय फ्यू लर्निंग्स दैट आई थिंक इन अ briefly I've shared with you is that validate your idea. You know, those 5 points. Have a great team. When I say great team, I'm not saying that you need to have great degrees like IIMs, IITs. Those days are past now. Anybody who can show that they can build good value, investors will invest. If you are from IT, IIM, your chances of raising capital are higher. But it is not that if you are from IT, IIM, you will be able to raise capital. Remember, from all the ITs, we get 16,000 students every year. And those 16,000 students, they start thousands of companies every year. And it is not that all of them are able to raise capital. I know a lot of guys from IT, IIM who started companies but who are not able to raise capital. Right? So, आजकल investors, they started investing in real merit. If you have IT, IIM, great. If you do not have that, but if you can show that you can build a great business, you've got a great team, people will invest. So have a team which has complementary skill set. People bring in diverse kind of skill set. People who have known each other for a very long time. Because startups में तो जब crisis आता है ना, जब तक चीजें अच्छी हो रही होती हैं कोई इशू नहीं होता. बट जब क्राइसिस आता है ना तो फिर बर्तन बजने शुरू हो जाता है. मैंने ये किया, तूने क्या किया, उसने क्या किया. It is human nature. It happens everywhere, right? So you have to have people with whom you can gel well in tough times. मैंने एक चीज लास्ट जब मैं आयुष के साथ शेयर की थी कि people who have not seen any battle मतलब आम जिंदगी में फौजी बैटल नहीं, बट हम आपकी मेरी भी तो एक लड़ाई है चल रही है, राइट? लाइफ इज टफ फॉर एवरीबॉडी.
people who have not seen that hardship of life, people who have not failed, my suggestion would be don't take them as your co-founder or your team members, because you don't know how they are going to behave when bells come. Yeah, when shit will hit the fan, you don't know, how they're going to respond. And in crisis, you want everybody to give their 100%. If it is not happening, you're going down. Right? So, इसलिए आजकल पहले मैं सोचता था कि इन्वेस्टर्स ये क्यों पूछते हैं कि अपना कोई फेलियर बताओ, ठीक है, या अपनी वीकनेस बताओ या अपनी स्ट्रेंथ बताओ, राइट? बहुत से यूजुअल होते हैं, बट उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उस फेलियर से आप कैसे निकले, क्योंकि स्टार्टअप में तो 30 दिनों में से 29 दिन फेल होने वाले हैं. वो एक दिन सक्सेस की होप आएगी, यार अच्छा किया इस महीने, ये एक दिन अच्छा था, राइट? एटलीस्ट इनिशियल पीरियड में तो वही होता है. इनिशियल पीरियड में तो इट इज लाइक 29 days आर डार्क डेज, डिप्रेसिंग डार्क डेज. एवरीथिंग दैट यू प्लान, नथिंग इज वर्किंग. ये रिसोर्स आया गया था, छोड़ के जा रहा है. वही आपका टेक देख रहा था, कौन देखेगा टेक अभी, ठीक है. मार्केटिंग जैसा सोचा था वैसा कोलैटरल नहीं बना, या वैसी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ज्वाइन नहीं करा, या ज्वाइन नहीं किया. और टेक वाले तो आजकल भगवान हो गए, मतलब भगवान मिल जाएगा टेक का अच्छा रिजल्ट. अभी तो चीजें फिर भी ठीक हो रही है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन amount of money, and not to their fault, you should make money when you can make money, but so you have to have right kind of people who have seen scars, people who have failed. तो आपको पता है कि बुरे माहौल, बुरे वक्त में भी बंदा इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, बिहेव करेगा. सो प्रेडिक्टेबिलिटी एटलीस्ट टीम के एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन सब चीजों का अगर हम ख्याल रखें. And second is, whenever you are talking to VC, there has to be like fire on your face. अगर आपका चेहरा लाल नहीं हो रहा किसी इन्वेस्टर के सामने, मतलब यहाँ पे आग नहीं है ना, तो फिर यहाँ दिखेगी नहीं, और यहाँ पे दिखेगी नहीं तो उससे फर्क नहीं पड़ता. उसको आप जैसे स्टोरी सुनाने वाले 100 आते हैं रोज, वो भी वेट कर रहा था यार पूरे दिन में. बहुत बकवास प्रेजेंटेशन हुई हैं, हर आदमी एक चीज लेकर एडटेक 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 फिनटेक फिनटेक फिनटेक, कुछ तो नया बता रहा है मुझे, या कुछ ऐसा होता है जो मुझे नहीं पता है. हमारे साथ एक अच्छी चीज ये हुई कि वेरी फ्यू VCs would understand the भारत मार्केट, वेरी फ्यू, ऑल not as deep understanding. I remember we started having conversation on lifetime value of a customer and on purchasing power of a customer. The lifetime तो बाद में था, purchasing power क्या लोग देंगे नहीं भारत को, क्योंकि ये नोशन बना हुआ है. आज भी इस रूम में लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि यू वांट टू टारगेट अ अर्बन कस्टमर लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, whose purchasing power is high because he is making more money than a customer in Satara, Sangli. Most of the time people will choose the urban customer. But trust me, the selective purchasing power in Bharat is very, very high. Let me give you some data points. The maximum consumption of gold is not in the urban. 66% of all the gold that is bought in a country छोटे शहरों में बिकता है, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में नहीं बिकता. मैक्सिमम स्पेंड ऑन मैरिजेस, मतलब बाप कर्जा लेगा लेकिन बेटी की शादी बिल्कुल टबैको, अल्कोहल, मशीनरीज. तो शायद sometimes I feel that people who are living in Bharat, they are more sensible than the urban customers. उनको पता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है. 100 रुपए खर्च करे तो 100 रुपए की वैल्यू निकालेगा बंदा. यहाँ पे 100 रुपए को हम गिनते ही 100 रुपए, ठीक है यार चलो. Their net worth is much better than urban customers. Second is, most of the people living in urban, they are in debts, some or the other. घर लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, एजुकेशन लोन पे है. वो डेट फ्री है, most of them you would find debt free, ठीक है. So जहाँ पैसा खर्च करना है वहां पे पैसा खर्च करेगा. I remember I was sitting with a government officer in Bhopal, and he said you would be surprised for police constable exam people come here with bag full of money, बोरियों में भर के लेके आते हैं 10 से 15 लाख रुपए. So मैं बोला सर 10 से 15 लाख रुपए आप उससे ले लोगे, और बेचारे पुलिस में जब भर्ती होता है तो उसकी कितनी तनख्वाह होती है शुरू में? 20,000 25,000, उतना भी नहीं होता शुरुआत में जब ज्वाइन करते हैं. कब निकलेगा इसका ROI? तो उसने बोला तुम सिर्फ इसकी सरकारी तनख्वाह को देख रहे हो, इसकी जो एडिशनल इनकम शुरू हो जाएगी, उसके बाद में जो गांव में रुआब आ जाएगा कि मेरा बेटा पुलिस कांस्टेबल है. सो पीपल
will bend over backward to secure a government job in Bharat because there are no other avenues. वहाँ पे ना फैक्ट्रीज है ना गुड प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो करेगा क्या? उसके पास एक ही ऑप्शन है, सरकारी नौकरी. एंड सरकारी नौकरी इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर दोज गाइस. मेरा बेटा कांस्टेबल, मेरा बेटा इंस्पेक्टर. अच्छी शादी होती है और जो शादी के साथ में जो नहीं मिलने चाहिए वो पर्क्स और बेनिफिट भी उनको मिलते हैं, राइट? सो ये जब आता है, जब आप थोड़े से डीप गए होते हैं अपने मार्केट में, फिर वो अच्छा यार ऐसा भी होता है, अच्छा और बताओ, फिर उसका इंटरेस्ट जाता है, फिर वो अपनी दूसरी मीटिंग कैंसिल करेगा कि उस मीटिंग अगर ऐसा कुछ होता था, नहीं गेटिंग क्लोज, यार ही इज गेटिंग एक्साइटेड, इज वार्मिंग अप. एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई लर्नड वाज दैट लाइफ टाइम वैल्यू फॉर कस्टमर इज वेरी लार्ज इन भारत. और लॉयल्टी वाला फैक्टर है, अगर उसको कोई चीज अच्छी लग गई ना तो टिकेगा उसके ऊपर, और अपने 4 दोस्तों को और बताएगा यार ठीक है ले लो. हमें खुद ही नहीं पता होता दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर में कि हमें अच्छा क्या लग गया है. अब तक ये अच्छा था, थोड़ी देर में दूसरा कुछ अच्छा लग रहा है. So that's why I said it is comparatively easier to acquire, so not easier, but it is cheaper to acquire, retain, and serve a customer who's coming from Bharat. So these are small nitty-gritties which if you are able to show to an investor, उसको लगेगा यार ये बंदा कितनी देर में बात नहीं कर रहा है, देखा इसने, और उनको वैसा ही बंदा चाहिए जिसने थोड़ा बहुत चीजें देखी. That's why most of the investors would ask you कि यार relevant experience क्या है तुम्हारे पास. मतलब मैं एक लॉ का बंदा बोलूं कि मैं तो एक एआई की कंपनी शुरू कर रहा हूँ, मान लो, पहला सवाल कि कैसे, क्या तो तुम्हारी एजुकेशन होनी चाहिए, दिखा सको भैया मैंने एआई के अंदर पीएचडी कर ली, जॉर्जिया टेक वगैरह गया हूँ, वो दिखाओ क्या तुम क्रेडेंशियल्स अपने, या फिर ये दिखाओ कि यार मैंने काम किया है, या मैंने इतनी रिसर्च की है और I have that knowledge now. So anybody who's raising capital from angels and VCs, you have to go very, very prepared. Very, very prepared. And I think today there are a lot of tools, lot of platforms, lot of feedback. You know, startup जो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसी पे अगर आप डाल दोगे अपनी पहली प्रेजेंटेशन और सबसे बोले आई रिक्वेस्ट प्लीज क्रिटिसाइज, मुझे अच्छा तो कुछ सुनना ही नहीं है, जो अच्छा है वो अच्छा है, छोड़ो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आपको तो जो चीजें खराब है उनको फिक्स करना है ना, डाल दो. लेट कोई कॉल कॉपी भी कर रहा है, कर लेने दो. आइडियाज आर फ्री इन द एयर. In fact, today there was a thread about please fill this form. अच्छा. My computer is fine. That's what it is. So और थोड़ा शेमलेस होना पड़ता है क्योंकि रिजेक्शंस तो बहुत सारे मिलने वाले हैं. मतलब ऑन एवरेज अनलेस अनटिल यू आर वेरी वेरी लकी कि आप पहले वीसी से मिले या एंजल से मिले, पहले ने बोल दिया ओके आई डू इट. जनरली ऑन एवरेज यू मीट 20 to 30 investors before somebody will say yes. You have to be very patient, you have to be very consistent. Sometimes VCs, they also want to test your grit, your conviction. They also want to test your grit, your conviction. कि थोड़ा धीमे रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, ये बंदा कितनी बार फॉलोअप ले रहा है. सबको अच्छा लगता है वो इंसान जो गिव अप नहीं करता. कि स्टार्टअप में तो हर दूसरे दिन ऐसा था यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. इट्स वेरी वेरी टफ एंड देन इट्स अ वेरी लोनली अफेयर. और गलती से अगर आप सीईओ वगैरह हो तो और भी लोनली. किसी को बता नहीं सकते कि मुझे भी डर लग रहा है अंदर से, या मैं भी बहुत प्रेशर में हूँ. You can't show that, right? Because everybody would look up to you and you need to be like very strong. You need to have solution for everything, which does not happen. It's practically impossible for human beings to have solutions and not to be in fear all the time. So, but बंदा गिव अप नहीं कर रहा, वो एटीट्यूड आपने दिखा दिया, और बंदा रैशनल है, बंदे ने अपने आप को घिसा इस मार्केट में. पीपल विल पिक. There's a lot of money flying in the market, lot of money. आज तो अब मतलब पुणे के अंदर ही वीसी फंड आ गए हैं, राइट? वरना पहले तो क्या तो बैंगलोर जाओ मीटिंग के लिए, बॉम्बे या दिल्ली, बट नाउ यू आर नॉट इन्वेस्टर्स इन पुणे एज वेल. सो preparation is very very important. And another thing that I would want to share with you is that whenever we are approaching a VC, if we could have all the ingredients in place, कि ये कुछ टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए, ये पाइपलाइन में है, आ जाएंगे, ठीक है, इनसे बातचीत होगी, ठीक है, और ये बंदा ये स्किल सेट लेके आ रहा है,
VCs will also want to, some of them would ask you कि ठीक है, if we don't invest then what? It's a great question. If somebody is throwing that at you, समझ लो आपने कुछ अच्छा काम कर दिया। और उस टाइम आपने दिखा दिया कि सर आप नहीं तो कहीं और से ले आऊंगा पैसा, तो उसे पता है कि यार ये रुकने वाला नहीं है, और ऐसे बंदे चाहिए किसी को जो रुके ना। So, and the moments VCs or angels start throwing tough questions at you now, some of you have been able to create a very good impression to those guys. So, do that, you'll get 10-15 minutes to start with, and you have to make best use of that time. समझ लो वो जो चकदे वाला डायलॉग नहीं था कि ये, समझ लो ये 10 से 15 मिनट आपकी जिंदगी के, एंड उससे में जितनी आग है, जितना फायर है, जितना पैशन है, वो सब दिखा दो, बट इमोशंस के साथ रैशनैलिटी का proper mix होना चाहिए. So, this is what I have learned, and it is a continuous journey. We keep learning every time you face any investor, not just investor, you meet anybody, your customer, your partner, you have to keep learning. जैसे हमारे मार्केट की मैं एक चीज बताऊं कि हमें पहले कभी हमने सोचा था नहीं था कि मीम मार्केटिंग इज गोइंग टू बी सो पॉपुलर. हमने कुछ अपने कस्टमर्स, I used to call it meme. अच्छा, Till one point of time in my life. तो right now समझाए. तो हमने अपने कुछ कस्टमर्स के फेसबुक पेजेस पे जाके देखना शुरू कर दिया, वो डिफरेंट मीम्स आ रहे थे, और ओह वेरी नाइस. तो हमने देखा यार मीम भी बंदे बहुत शेयर कर रहे हैं, तो अगर हम ये करेंगे तो उससे कुछ पॉजिटिव आएगा, एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट एंड वी स्टार्ट गेटिंग गुड रिस्पांस. आप अगर अपने कस्टमर को सबसे बेहतर तरीके से नहीं जानते हो ना, तो आप अपने बिजनेस में कुछ उखाड़ नहीं सकते. What I'm trying to tell you is, if you have the same amount of knowledge about a particular market or customer that I have or Ayush, if it is at par with both of us, then you can't raise capital. You have to have more knowledge, more understanding of your customer and market than anybody else. That's the premium. वरना आप भी वही चीजें करोगे जो मैं या आयुष करेंगे, और उसका रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ही होगा. सबके सब वही चीज करेंगे तो सबका रिजल्ट तकरीबन वैसा ही होगा. So disruption is necessary. Yes. So you have to know your customers. मतलब you have to know them like your brother or your sister. ये कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, क्या फेवरेट कलर है, कहाँ जाके एंटरटेनमेंट करता है, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, बॉयफ्रेंड है कि नहीं, कैसा पैसा खर्च करता है. यू हैव टू हैव ऑल ऑफ दिस. तो फिर आप एक ग्रेट कस्टमर पर्सोना बना सकते हो, और अगर एक ग्रेट कस्टमर पर्सोना बना लिया तो फिर आप एक ग्रेट यूजर जर्नी बना सकते हो उसको देख के. सो बहुत सारे जो मैंने बोला है, बहुत सारा ज्ञान ऑनलाइन अवेलेबल है, बट दिस इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी, एंड I thought I should come and share this with all of you. So thank you so much for the opportunity. Very interesting, and I think you pretty much covered all the important things in a way, though it's available maybe online, Yes. but in a way that's more understandable, relatable, coming from the horse's mouth. So all these things, create its own value. Thank you. So thank you so much. So I think let's do few questions from people. Sure. Who, and I can tell that one of the best questions at the end of the event will get a prize. Okay. Wow. So come up with interesting questions. So yeah, why not we start some questions? Could you just share one practical example of when you went to this tier 2, tier 3 cities, or probably the private city that you went? What kind of questions you had? I mean, of course, it would be a flow of conversation with them, but just to get more practical, how did you get to know more about them? And So- one follow-up question, just to add on this to some more curiosity that I had, is that you made a plan when you plan to visit these cities. So were you trying to get in connection with someone local to basically organize your visit there, or you would just go there randomly and try to then talk to people? How was your overall thing, if anyone wants to do that? So we were invited by a school. We reached out to an institution. So one thing that we realized about Bharat market was that the credibility of an institution in Bharat market is much bigger than an individual. School,
मान लीजिए एक गांव के स्कूल में, गांव के उस स्कूल को सब लोग जानते होंगे, लेकिन उस गांव के स्कूल का कोई टीचर होगा, उसको शायद सारे लोग ना जानते हैं। तो अगर स्कूल ने बोल दिया कि यार ये लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर लो, स्कूल की तरफ से एक कम्युनिकेशन चला गया, तो जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हम रेफरेंस से ग्रो करें, राइट। 66% ऑफ ऑल आवर यूजर्स दे कम थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। तो हमने क्या किया कि यार भारत में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, जो छोटे शहर